Hi everyone, welcome to YourPedia and this is Shubha. So this video is all about the HR preparation interview questions if you're preparing for IOCL. So do watch the video till the end and jot down many important questions. Now here I have jotted down a list of more than 70 plus questions are there, and I tell you these are 100% authentic questions. Now where I have got this list is मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों से whatever who have appeared in the interviews of IOCL, I've taken their feedbacks and I have made the classifications also कि क्या क्या questions आपको पूछे गए हैं. I'll try to provide you the answers of all these questions in my next videos, but yes, do watch this video till the end and try to even make your own subjective answers and we will discuss in our HR rounds. Now I tell you one thing which is very important is the classification कि कौन सी category से IOCL आपको hit करता है, किसके subsection से. Now here I have made the list of the classifications. Now see, there I have made 6 classifications. The first important one is about IOCL. मतलब if you were thinking about like preparation of an organization, तो organization से related बहुत questions आते हैं. What kind of you can say website से related, IOCL की currently what are the new products which are being launched, IOCL की website से related, and you will get a complete documentation. The documentation we provide you for IOCL, that is actually sufficient. If you want more of it, so you can even go to the website कि website कैसी है IOCL की, what is the color theme, क्या आपको ड्रॉबैक्स लगते हैं वेबसाइट से रिलेटेड. आई प्रोवाइड यू ऑल द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इसके रिलेटेड है. माय फर्दर यू कैन से द स्लाइड्स अबाउट यू. Now obviously they want to test you as a personality, what kind of a personality you are. आपका personality check ही तो है इंटरव्यू से. So आपकी hobbies क्या हैं, introduction, and I tell you one thing, you mention in your introduction my mother's name, my father's name, or you start reading your CV. No, that is 100% wrong. So you need to prepare your introduction really well. Hobbies क्या हैं आपकी, hobbies से related क्या questions है, strength और weakness क्या है, mission vision क्या है आपकी life का. So all these come in the classification of about you. Then you have about your job experience. Let me tell you, if you're working in an organization, so if you are working or if you are working, तो पहले तो अगर काम कर रहे थे तो roles and responsibilities क्या थी, क्यों आपने currently switch किया. Suppose आप B.Tech के थे, आपने banking में चले गए and now you want to go for IOCL, तो इतना shift क्यों है आपके. Then you have is like currently अगर आप work कर रहे हो तो क्यों छोड़ना चाहते हो, what is the reason. And one thing which is very important, you come and answer in my HR questions is, ma'am, I don't like the environment. मैम करंटली ये PSU मुझे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, मेरे को फंड्स बहुत अच्छे मिलेंगे, मेरे को मेडिकल फैसिलिटीज. सो दिस इज अ रॉन्ग वे टू आंसर द क्वेश्चंस. सो नेवर एवर क्रिटिसाइज योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड नेवर एवर से द मॉनिटरी बेनिफिट्स विच यू विल गेट इन IOCL और एनी द PSU. सो ये आंसर्स आपको प्रिपेयर कैसे करने हैं, आई गाइड यू entirely about it, but yes, never use the algorithms which are using right now. About your studies, M.Tech pass out करने वाले हो, लास्ट ईयर में हो, तो PSU के लिए आर यू रेडी. Why you think you want to go in a PSU? What opportunities you will get in a PSU? So बहुत ज़्यादा आपके स्टडीज के रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, M.Tech से रिलेटेड, even that can be a, you can say, subsection of it. About current affairs. करंट अफेयर्स है, फर्स्ट यू विल गेट द डॉक्यूमेंटेशन कि करंट अफेयर्स क्या क्या पूछे जाते हैं. तो वी प्रोवाइड यू, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैम, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. यू डोंट नीड टू गो थ्रू एवरी डिटेल्स. अगर आप गूगल पे जाके न्यूज़ सेक्शन में भी जाते हो, सो उसमें आपको करंटली क्या होता है, आधी न्यूज़ तो दैट्स नॉट इवन वैलिड कि पोस्ट निकली ये हुआ. यू जस्ट नीड टू गो चेक व्हाट वाज एक्चुअली करंट अफेयर रिलेटेड टू इट. देन मिसलेनियस, जो भी क्वेश्चंस इन कैटेगरीज में नहीं फिट इन हो रहे थे, तो आई हैव टर्म्ड इट इन द मिसलेनियस सेक्शन एंड यू कैन जस्ट नोट डाउन. 70 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लो, या आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स रिलेटेड टू इट दैट यू विल गेट इट. जैसे प्रोडक्ट्स क्या है IOCL के, लास्ट ईयर बच्चों को पूछा गया था क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है. IOCL का पेट्रोल पंप, रिलायंस का पेट्रोल पंप और HPCL का पेट्रोल पंप. आपके घर के पास कौन सा पेट्रोल पंप है, डिफरेंस क्या है इन पेट्रोल पंप्स में. सो नो दे जस्ट ट्राई टू चेक आउट कि आर यू एक्चुअली अवेयर अबाउट द फैसिलिटीज और द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग वे प्रेजेंट इन IOCL. कॉम्पिटिटर्स कौन है IOCL के, डिवीजन क्या है IOCL में, व्हाट इज द नेम ऑफ CMD ऑफ IOCL. अब करंटली जो मेंबर्स हैं, हायरार्की कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन का CMD कौन है, तो दैट यू नीड टू नो. फॉर दिस यू नीड टू गेट टू द वेबसाइट ऑल्सो कि आपने क्या वेबसाइट चेक की थी बिफोर कमिंग टू द इंटरव्यू. दैट इज ऑल यू कैन अंडरस्टैंड इज दे आर चेकिंग कि हाउ मच यू आर अवेयर कि सीधा आपने पेपर क्लियर किया, यू जस्ट गेटिंग आउट इन द इंटरव्यू सेक्शन एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग. सो डू चेक द वेबसाइट ऑल्सो.
What if your hobbies and passion didn't match with IOCL? Would you stay or not? Or how do you see your future with IOCL? So these questions are related. Every organization, they want you in a long run. They actually want you as an employee for a long term. They don't see you as a short term employee. कि अभी switch कर जाओगे. So it actually shows your authentication कितना आप उनके साथ see your vision in your life. तो आपके vision से related ये questions आ जाते हैं. Then is, what will you give in return to IOCL? This was very important questions and students were unable to answer. So it is like कि IOCL आपको बहुत opportunities दे रही है, practical exposure में मिल रहा है, लेकिन आप क्या दे रहे हो return में IOCL को? What do you like in IOCL PPT? Details about IOCL. So it is all about, अगर website देखी है IOCL की, तो how would you rate it out of 10? ड्रॉबैक्स क्या लगे थे IOCL की वेबसाइट में, या फेवरेट पॉइंट क्या था IOCL की वेबसाइट का? सो इट इज नॉट अबाउट दे आर ट्राइंग टू फाइंड द फॉल्ट्स, दे आर एक्चुअली चेकिंग योर, यू कैन से कितना आप डिटेल्ड उनके बारे में पढ़ के आए हो. सो फॉर दिस यू नीड टू बी अवेयर अबाउट एवरी क्रक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. What is the operation style of IOCL? How will you utilize your management skill in IOCL? What impact IOCL had made on common people? मतलब common people पे कैसे IOCL impact डाल रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है? What you learned from COVID and how will you implement this in IOCL? देखो current last 2 years के जो question थे, COVID was at the boom at that time. तो ऑब्वियसली करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट इज वन क्वेश्चन कि IOCL कोविड में दे ट्राई टू, यू कैन से रिलेट इट आउट. इफ यू गेट सिलेक्टेड इन CIL एंड IOCL, विच वन विल यू चूज? मतलब आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, PSUs में डिफरेंट सिलेक्शंस हैं, और कौन से PSU में आपने अप्लाई किया है. सो सच क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू. इफ यू आर चेयरमैन ऑफ IOCL, व्हाट चेंजेस विल यू मेक? आपको अगर हेड बना दिया जाए एक दिन में, तो ठीक है, आप क्या चेंजेस लाना चाहोगे IOCL में? सो यू नो दीज आर द सिचुएशन क्वेश्चंस. पोस्टिंग अगर साउथ में हो जाए तो क्या करोगे? सबऑर्डिनेट्स में लड़ाई हो जाएगी तो क्या करोगे? सो सच सिचुएशनल क्वेश्चंस. What your friend who is working in IOCL says about IOCL? They actually try to check out कि आपको IOCL के बारे में, जैसे sometimes you answer वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो कैसे पता आपको? आपके फ्रेंड्स जो वर्क कर रहे हैं या कुछ सीनियर्स थे बैच के, तो हाउ डू यू नो अबाउट IOCL? तो आपको IOCL की PSU, द गुड एनवायरमेंट ऑफ इट, हाउ डू यू नो? तो वो भी आपको बताना पड़ेगा. How will be useful? How will you be useful for IOCL? आप कैसे, एक बोलते हैं ना, what are the 3 traits? आप में क्या है ऐसा कि मैं आपको हायर करूं? Now these 2 pages were all about the organization. Now this carries a list आपके बारे में, आपकी brief introduction. And this I told at the start also कि please do not start reading your CV in the introduction, or do not mention about your parents' name, mother's name. Today only the student was giving an you can say the HR. He mentioned good morning ma'am, my name is this. And then he started mentioning मेरे पापा का नाम ये है, मदर का नाम ये है, भाई का नाम ये है. They want to know about you, about the skill set of yours. So prepare your introduction very nicely in a brief 1 minute. Try to portray your skill set. That is actually needed. तो introduction बहुत ज़रूरी है. What is your dream? या strength और weakness क्या है आपकी? What are you very ambitious? Strength और weakness को target करते करते hobbies. Why are you not pursuing your hobby? सपोज मेनी टाइम स्टूडेंट्स काम की मेरी हॉबीज़ है, टीचिंग करना मेरी हॉबी है, मैं टीच करता हूँ, मैं ट्यूशन्स लेता हूँ, तो टीचिंग में क्यों नहीं करियर बना रहे हो? PSU में क्यों जाना चाहते हो? तो व्हाई यू आर नॉट मेकिंग योर हॉबी एज योर करियर ऑप्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. What if your hobbies and passion? This is now there is a kind of a overlap because I saw some of the questions in both the categories. They fitted in both the categories. So that is why you will see an overlap also. You need to prepare it nicely in both the sets. Tell us something about that. Is like कुछ चीज़ ऐसी आपकी हो जो आपने CV में मेंशन ना की हो, बट यू आर देयर, तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेल इट. देन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years? 10 साल बाद अपने आप को, लाइक योर विजन क्या है आपका लाइफ का? व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स? मिशन आ जाता है, विजन आ जाता है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? देन अबाउट द जॉब एक्सपीरियंस, एज आई टोल्ड यू, व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब. Now here, do not criticize it out. You have to speak about, you can say, the practical exposure which you had, or for the financial stability. Though I'll provide you a good answers because you need to discuss, and even you need to provide your valid reasons. Then only I can frame the answers for you. Why you want to join PSU? PSU में ऐसा क्या है कि आप PSU ज्वाइन करना चाहते हो? Why not private job? Now this is very important. PSUs versus private, because every student comes, they're working in a private organization and they say like, मैम स्टेबिलिटी नहीं है, मॉनिटरी बेनिफिट ज़्यादा है, मेरा स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा सोसाइटी में. दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू आंसर. सो
For what is the exact answer? How do you need to frame it out? We need to discuss it in the HR sessions. Then is explain your previous job experience, kya roles and responsibilities the. If we put you in the sales, then how will you use your technical background? Suppose आपको select तो कर लिया जाए, लेकिन बैकग्राउंड आपको टेक्निकल ना दिया जाए, कुछ और दे दिया जाए, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे अपनी नेचर ऑफ वर्क को? यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेम फील्ड, देन व्हाई हियर? व्हाई यू वांट टू जॉइन पब्लिक सेक्टर विद दिस गुड ग्रेड्स? व्हाई PSU एंड नॉट प्राइवेट जॉब? Why left your previous job? Why didn't you take a job yet? अब बहुत बच्चे बहुत ईयर से प्रिपेयर कर रहे होते हैं and they have not taken a job yet. So they have a reason valid कि प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं. क्यों प्रिपेयर, क्यों PSU के पीछे 3-4 साल से पढ़े हो या 10 साल हो गया, यू हैव अ गैप. So why is a gap in your resume? तो gap से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं and they actually ask you कि gap आपको, and you should provide an authentic answer. You need not to bluff it out या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है because they are very smart and you will be trapped. So never ever fake the answers and you need to, and I tell you must, that is very important कि गैप के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे थे, they got selected. Last year we had a selection, I think the girl had a gap of 12 years and she got selected. So that should not be a problem and you should not bluff in these answers. Why you want to do MTech, right? Or are you here for good package only? Had you sat in your college placement, मतलब कि college placement में बैठे थे, वहाँ पे आपकी selection हुई थी या नहीं हुई थी? If you put in the sales, how will you use your technical background? Now this was the same question which was used in the previous ones also. So that is a kind of, you can say, the overlap. Will you leave your current studies if you get a job? Like suppose you are doing your MTech, you are doing your PhD, और अगर आपको job provide कर दिया जाए, तो क्या आपका mind का क्या था? Like are you ready to leave your the studies को continue करोगे या क्या करोगे? So what is your mindset in that? Why you were not selected in last year interview? Like someone who had appeared in the last time, तो आपको क्या लगता है? What was the valid reason that you were not selected? What do you like about mechanical engineering? Why haven't you done MTech? Now they actually try to understand कि आपने BTech के बाद you started preparing. So why you actually didn't do higher studies? या कईयों ने higher studies की होती है, तो why you did MTech? So they actually need to, you need to have a good presence of your mind, good humor for that, कि what should be the actual answers for such questions. Now, how many petrol pumps are there in India? So that is some kind of a generic answers they provide. Governor of your state, current affairs, who is your defense minister? Current president of India, important geopolitical news. Who is the petroleum minister, state petroleum minister? What will you prefer, Tata or Trends? Petrol cost in your city, political development of your city. So all the, you can say, the current related topics, जो भी news में है इस time पे trending. So that is very important. Now some kind of a miscellaneous questions like what is the time management? What will you prefer, Tata or Trends? Like same, you can say I have put it in the miscellaneous ones also. If company calls you at odd times for working, will you manage? Matlab they want to check out your availability. Are you preferring for the long term? If you are not there, or you can say that is an order for you. Are you still ready to work for us? If we put you in the sales, now this is the same question which is used as an overlap कि अगर आप sales में हो, technical background को कैसे use करोगे? Your colleagues are getting retired in a week and they're not working, but you need some help from them. How will you manage? Now these are all the situational questions I tell you. How will you increase our sales if you put in a sale department? Will you move to east or any other state for job? Explain work-life balance, because this is a thing which everyone comes and tells us कि मैम PSU IOCL में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, और आगे से sometimes you get an answer that we are not even living with our families, it's a transferable job. How you are telling us कि there is a good work life balance? So before you speak any word in an interview, measure your word, because that is much important to justify it, and for that I'm going to help you out. Now see, I have discussed so many classifications and there were approximately more than 70 plus questions. I'll try to provide you answers of these all the questions, and some of the discussions will be there in the HR sessions also. So do join YourPedia for all the HR sessions, and we will have multiple of it. So we have got good number of mentors and everyone would be ready to discuss current affairs, miscellaneous, educational background, previous year experiences, and how you need to introduce yourself, which is very, very important. So stay tuned, watch YourPedia, and yes, I'm coming up with much more good questions. Rely on us and I'll tell you, you're going to crack the interview. Take care and have a nice day.